हेलो गाइस, आज के DIY के लिए चाहिए कोकोनट शेल्स, ब्रशेस। मैं फ्लैट ब्रश का भी यूज़ करूँगी, सो यू नीड दीज टाइप ऑफ ब्रशेस, पैलेट, acrylic colors. I have many colors, but as of now I am using the basic color, and yeah, and water and a cloth, and आपको चाहिए ग्लू। तो मेरे पास एक फेविबॉन्ड का ग्लू है जिससे काफ़ी अच्छे से चिपकता है। आप फेविस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल का मत यूज़ करना बिकॉज आई डोंट थिंक सो वो चिपकेगा। एंड वी आर प्लानिंग टू मेक प्लेटर, सो आई वॉज प्लानिंग टू जस्ट स्टिक इट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सो या, पहले स्टिक करने से पहले वी कैन पेंट ऑन दिस, सो आई विल डायरेक्टली पेंट इट बिकॉज या इस पर ड्रॉ करने से बेटर है एक इजी सा डिज़ाइन पेंट करेंगे, so that will be quite easy for us. So I'm taking out this red color. Yeah, this is a crimson red color. If you want smooth surface, you can just rub it with paper. I forgot the name of the paper actually. It's sandpaper, yeah. So you can use sandpaper for that. I don't have the sandpaper, because of that I have kept that as it is. So yeah. I'm keeping something like this. आई लव टू डू DIY, एंड DIY में ज़्यादा आपको स्पेंड करने का भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू वट एवर इज़ अवेलेबल इन योर होम। बस आपको कलर्स और कुछ ब्रशेस लेने हैं। अदर दैन दैट यू डोंट नीड एनीथिंग। कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू थ्रो समथिंग घर के बाहर या फिर कचरे में, सो try to make it or reuse it, or try to make something creative, artistic, something like that. So yeah, क्योंकि वेस्ट बहुत बढ़ रहा है इंडिया का। यू कैन सी लाइक बहुत ज़्यादा कचरा हम करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इसके लिए बहुत कचरा भी होता है। सो इंस्टेड ऑफ throwing it, you can just reuse it or repaint it, make it artistic, something, and you can't use it as it is. Like you can use this as it is, but अगर वो ज़्यादा कलरफुल क्रिएटिव होगा then it will look more good, and वो आपको फेंकने का मन नहीं करेगा. So that's the importance, or that's the benefit if you are coloring it or making it artistically. I'll just quickly paint this. Yeah, so painting is done for this part.
ऊपर I'll paint some another color. I was planning for red color. Just closing this because acrylic color जल्दी सूख जाता है, so waste ना हो इसके लिए can close it. And now brush साफ करके I'm using this white color. Shake it before you are using it because oil होता है कलर में, उसकी वजह से वो अच्छे से आता नहीं है ब्रश पे. नॉट ओनली ब्रश पे बट ऑल्सो दी कलर बेटर नहीं हो ढंग से, तो इसके लिए यू कैन यूज़ दिस. आई डोंट नो व्हाई इट्स टर्न टू पिंक बट या. The pink color is also looks good, so I'm making it as pink only and using wet color again. And keep it for dry because अगर ये ड्राई नहीं होगा तो ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा दूसरे वाले कोकोनट शेल पे. So keep it for dry. I'm making this flower like design. Yeah, something like that. And यहाँ पे बस कुछ स्पेस बचा हुआ है कलरिंग का, so I'll make that as well. Yeah. रियली लुक्स प्रिटी. अभी ये हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक आई विल पेंट ऑन दिस. वी वांट टू स्टिक लाइक दिस, तो ऐसे हम कुछ पेंट करेंगे. सो आई वाज प्लानिंग टू पेंट समथिंग लाइक अ डॉल. सो आई विल क्विकली टेक द स्किन कलर. I have this skin color. So you can directly put something like this. So this will be the front face, and yeah, you can paint a bit here, and of course here. Yeah, so this is how it will look, half of the part. Yeah. There is one more option which you can do. There is one thing called gesso. I don't have gesso, I have this white acrylic color. If you want to paint something which is a not smooth surface,
then you can first paint it with gesso and then you can paint it with other color. So yeah, that is a tip from me. And I have planning for like making it as a doll, so I'll just quickly grab my black color to make her hair. So I'm making her hair. इधर थोड़ा मैं गैप छोड़ रही हूँ so that I can hold that coconut shell. And this back side will be her hair, so I'll painting it completely with black color. Yeah, I guess we are done. Let's keep it for 5 minutes to dry. So we'll keep this aside to dry and we will make some dots. So I have this white color. Just take this part and just do make dots. If you want to make heart, that also you can do it.
So it's done. So now we will stick with the help of this Fevi Bond.